Hello and welcome to The Print. The counting for Delhi's 70 assembly seats has begun. This marks the end of a high octane election which saw the Bharatiya Janata Party and the Congress trying to dislodge the Aam Aadmi Party from the national capital, while the BJP and the Congress trained their guns at the Arvind Kejriwal led Aam Aadmi Party, talking about graft allegations and its unfulfilled promises. The Aam Aadmi Party relied on its guarantees and its track record of governance. Now, we'll be keeping track of the elections and the counting as it happens through the day. We have a live blog running on our website, and we'll be bringing you videos with a constant analysis and with updates through the day. So do keep an eye out on our YouTube channel as well as our website. As for the first analysis of the day, I have three of my colleagues and in-house experts with me. We have Shankar Animesh, Neelam Pandey, and Saurabh Roy Burman joining me, and um, we'll be bringing you the latest updates, the early trends, what they say, and what's at stake in Delhi. So, starting with Saurabh, who tracks up for us. Saurabh, tell us for starters what the early trends show and what's at stake for the Aam Aadmi Party. See, the early trends are mostly along the lines of what the exit polls had predicted, that the BJP is going to have an edge. And obviously, these are very early numbers. Only the postal ballots seem to have been counted so far. So in that, BJP has gained a lead of 10 to 12 seats. And the numbers must be worrying the Aam Aadmi Party. Won the last two elections with big mandates, big numbers, 67 seats, Right, 62 seats. So right. they, it seems there is a possibility that the winning streak of the AAP is going to end. And I what mean, does it's that mean for the party? Hmm. well, the the party will still remain in power in Punjab, but Hmm. this is where the party was born, from the Right. cradle of the India Against Corruption movement, Hmm. and it has been in power in Delhi since 2015. It's been a decade. Even in Hmm. 2013, it had managed to form a government, which did not last. So it will be out of power for the first time in a decade in Delhi, and we'll have to see how the party functions when it is in the opposition. The AAP has always been a very combative sort of a party, so one would Hmm. expect the party to remain combative even in the opposition, maybe more combative. So we'll have to see how things play out. Of course, we'll be tracking that even after today, after the election. Moving to you, Neelam, tell us what's at stake for the BJP. Purva, this is something that I have been writing in a number of my pieces that I've done for the print also, that for the BJP, which has, last it was in power in 1993, 1998 was when Sushma Swaraj was the chief minister. So they have waited for, several years to make a comeback, something which has not happened for them. So for them, this election was, in their own words, a golden opportunity. BJP leaders used to tell us that if BJP can ever come to power in Delhi, then this is the right time. So for them, everything is at stake. You saw their campaign right from Prime Minister Narendra Modi to Union Home Minister Amit Shah. We saw how Yogi Adityanath was involved till the Kumbh tragedy took place. So the BJP was highly involved in this election right from day one. If we look at the basic the numbers that have trickled down right now, Parvesh Sahib Singh Verma, who took on Arvind Kejriwal, right now he's leading. So whether he wins or loses, what is important is that BJP decided that a former MP, a former MLA, a leader who is known for his electoral background, he should take on Arvind Kejriwal. So the party was very clear that it needs to give a strong message that it is, pulling out all guns to ensure a win this time. At the same time, apart from the BJP, RSS also was quite involved in these elections. Though a number of its functionaries were busy with Kumbh, however, it still managed to ensure that it did sort of push and force people to go out and vote. We still do not have the final voter percentage, but the BJP is hoping that people who would have voted for them were there in those queues. So for the BJP,
The entire campaign stood around, talking about highlighting the corruption allegation, the Sheesh Mahal, what they can offer. So this is the first time that we saw BJP also said that they will be okay with freebies, the Revdi culture that the PM had once criticized. We saw that the BJP has offered 2,500 if voted to power. So for the BJP, it went all out. It wanted to give a message that whatever AAP can do, we can do better. So for me, I mean, I feel that for them, as I said, this election is rightly the golden opportunity. If they can come to power right now, or if they can't come to power right now, it will be very difficult for them to come in the future. राइट हमने इस बारे में शंकर जी काफी अभी तक बात कर ली है कि जैसे बीजेपी 1998 से 27 साल हो गए हैं जब से बीजेपी इस अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रही थी। शंकर जी हमें ये समझाइए कि क्यों इतना समय लग गया बीजेपी को, क्यों दिल्ली एक तरह से एक पहेली बनी हुई थी बीजेपी के लिए अब तक। अभी आगे भी हम देखेंगे क्या हो रहा है, रिजल्ट्स आए नहीं है, पर अभी तक क्यों इतने सालों तक पहेली बनी हुई थी। देखिए, अगर आप बीजेपी के ग्राफ को देखें दिल्ली में, तो दिल्ली में बीजेपी कभी भी कमजोर नहीं थी। आप जनसंघ के जमाने से देखें, 1967 की मैं बात कर रहा हूं कि जब दिल्ली मेट्रोपॉलिटन का इलेक्शन हुआ था और उस जमाने में वीके मल्होत्रा और लाल कृष्ण आडवाणी चुने गए थे, तो उस जमाने में भी लोकसभा की जो सीटें थी उसमें से सीटें बीजेपी ने जीती थी। यानी कि ये सिर्फ नरेंद्र मोदी फिनोमेना नहीं है कि दिल्ली में बीजेपी 7 की 7 सीटें जीत रही है लोकसभा की, यानी कि 67 में बीजेपी ये माइलस्टोन कर चुकी है, 7 में से 6 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। तो दिल्ली में बीजेपी हमेशा से मजबूत रही। जनसंघ का जो जन्म हुआ था वो दिल्ली और पंजाब से हुआ था। आप देखें कि जब मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री थे और उस जमाने के बाद जब शीला दीक्षित आई, तब भी बीजेपी का दिल्ली में जो वोट शेयर है वो 32% से नीचे नहीं गया। आप दूसरे राज्यों से अगर तुलना करें जहां पे बीजेपी 15-16%, 17%, 18%, बिहार जैसे राज्य से अगर मैं इसकी तुलना करूं जहां पे लोकसभा की 40 सीटें हैं, वहां पे बीजेपी का जो वोट शेयर है वो 18 से 22% के बीच में स्विंग करता है। लेकिन दिल्ली जैसे राज्य में जहां पे 32% बीजेपी का फिक्स वोट शेयर है, 38% तक वोट शेयर हो गया है। तो इसका ये मतलब है कि दिल्ली में बीजेपी कमजोर नहीं रही। शीला दीक्षित और जब कांग्रेस का जमाना था तो उस दौरान भी बीजेपी की रिस्पेक्टेबल सीटें थी, 15 और 20 सीटें बीजेपी जीती थी। दिल्ली में जो बीजेपी का जो ग्राफ कमजोर हुआ वो केजरीवाल के जमाने में हुआ कि जब बीजेपी 3 सीट और 8 सीट पर सिमट कर रह गई। तो उसका जो रीजन था कि जो अरविंद केजरीवाल थे वो एक ऐसे आंदोलन से निकल कर आए थे, करप्शन क्रूसेडर, उनकी जो एक कॉमन मैन की इमेज थी, वो एक तरह से पूरी दिल्ली को, मिडिल क्लास हो, वीकर सेक्शन हो, वुमेन हो, उन सबको मूव अरविंद केजरीवाल ने किया और इस तरह से बीजेपी का ग्राफ दिल्ली में लगातार कमजोर हुआ। क्योंकि दिल्ली में जो बीजेपी का वोट बैंक था, पहले पंजाबी वोट बैंक था, वो धीरे धीरे एरोड हो गया मदन लाल खुराना के जाने के बाद। उसके बाद जो मिडिल क्लास का वोट बैंक था वो अन्ना आंदोलन के बाद लोगों को लगा कि ये दूसरी आजादी का जंग चल रहा है, सारी मिडिल क्लास शिफ्ट हो गई। असेंबली इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल के लिए लोकसभा में बीजेपी मिडिल क्लास को बचा के रखा। उसी तरह से वुमेन जो वोट बैंक था वो फ्रीबीज और जो वेलफेयर मैकेनिज्म है उसके कारण शिफ्ट हो गया। तो दिल्ली में बीजेपी अरविंद केजरीवाल फिनोमेना आने के बाद कमजोर हुई। लेकिन अगर ये नतीजे जो इस समय शुरुआती ट्रेंड आ रहे हैं वो अगर कंटिन्यू रहते हैं, ये रिफ्लेक्ट होते हैं आने वाले 1-1.5 घंटे के बाद नतीजों में, तो आप समझिए कि बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी। क्योंकि पिछले कुछ सालों में आपने देखा कि ईस्ट से वेस्ट तक, यानी कि वेस्ट में उन्होंने शरद पवार से लेकर, उद्धव से लेकर, ईस्ट में नवीन पटनायक, सबको धूल चटा दिया। अश्वमेध का जो घोड़ा था वो सर पर दौड़ता रहा। सिर्फ 2 राज्य ऐसे थे जहां पे ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपना किला थामा हुआ था, खूंटा जमाया हुआ था। और बीजेपी के तमाम एफर्ट के बाद भी पिछले 10 सालों में, 12 सालों में बीजेपी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाई थी। तो अगर अरविंद केजरीवाल का किला दिल्ली में ढह जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के लिए एक बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं उनकी स्ट्रैटेजी की जीत होगी। क्योंकि सिर्फ 2 किले बचे हुए थे इस पूरे नॉर्थ इंडिया ईस्ट रीजन में, ममता बनर्जी का और अरविंद केजरीवाल का। बाकी सारे किले उन्होंने असेंबली में, चाहे अखिलेश यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, नवीन पटनायक हो, सबको उन्होंने धो दिया।
चूंकि साउथ इंडिया में बीजेपी वैसे भी कमजोर है, तो आप नहीं कह सकते कि स्टालिन को उन्होंने धूल नहीं चटाया अभी तक। लेकिन बाकी जहां पे बीजेपी का जो गढ़ है, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया है, वहां पर उन्होंने धूल चटा दिया। तो आज की अगर जीत, आज के जो शुरुआती रुझान है वो नतीजों में तब्दील होते हैं, तो एक तरह से बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए उनकी रणनीति, उनकी स्ट्रैटेजी की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी। और शायद जो आंदोलन से निकलकर राजनीति में आते हैं उनके लिए भी सबक होगा कि किस तरह से उन्हें अपनी राजनीति करनी चाहिए। अगर वो बाकी राजनेताओं की तरह राजनीति करेंगे, जो अरविंद केजरीवाल ने किया बाद के दिनों में, जब तक वो अपने आंदोलन की छवि को इंटैक्ट रखा हुआ था, बीजेपी के लिए मुश्किल था। जैसे ही वो आम राजनेता हुए, बीजेपी का जो केजरीवाल का वो जो डिफरेंशिएटर था वो खत्म हो गया, और बीजेपी के लिए बड़ा आसान था कि उस डिफरेंशिएटर के खत्म होते ही वो बाकी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की तरह उन्हें धूल चटा सकती है, जो शुरुआती रुझानों में दिख रहा है। बिल्कुल, तो काफ़ी कुछ दांव पे है इस समय सारी ही पार्टी जो इन्वॉल्व हैं उनके लिए। हम इस बारे में भी बात करेंगे कि इतना कुछ दांव पे है तो किस पार्टी ने क्या प्रॉमिस किया और किस तरह का कैंपेन चलाया। लेकिन उससे पहले हमें वी आर गेटिंग क्वेश्चंस ऑलरेडी ऑन आवर यूट्यूब चैट, सो आई विल बी टेकिंग one of them. Aditya is asking, do you think Aam Aadmi Party got a sense that this election will be difficult when they changed Manish Sisodia's seat? If Kejriwal, Sisodia and Atishi lost, do you think this might break Aam Aadmi Party further? Saurabh, would you like to take this? It was a tough election from the AAP from the very beginning. The entire leadership was in jail. All their leaders were in jail. Kejriwal was in jail. Manish Sisodia himself was in jail. Sanjay Singh was in jail. Satyendra Jain was in jail. All at the same time. So you had all these young crop of leaders trying to keep the party consolidated at that point. After Kejriwal walked out of jail, he tried to gradually regroup. And Sisodia, when it comes to Sisodia's seat being reshuffled from Patparganj to Jangpura, we also have to remember that even in 2020, Sisodia had a very thin margin of victory. He won by barely 3,000 votes. So there was a threat of him losing that seat, and which Right. has a large population of migrants as well as people from Uttarakhand, the hills. So there was a possibility that, and the BJP was in a good position there, and there was a possibility that he could have actually lost that seat, also because of the fact that for the most part of his tenure this time he was in jail. He could not really Right. serve the constituency that well. Mm-hmm. What was the We other have part? sorry, continue, Saurabh. I thought, what was the other part of the question? If Kejriwal, Sisodia, and Atishi lost, do you think that this might further break Aam Aadmi Party? Well, it depends on whether the party loses the elections. I mean, there is a threat of the party disintegrating because, as I earlier mentioned, that Aam Aadmi Party has always fashioned itself as a post-ideological party. It doesn't stand for any ideology, right? It always had this deletion for all kinds of isms. So when you are not in power, that will be tested. So how do you keep your Right. flock together? We have another question coming in. Shankar, Neelam, either of you can take it. The question says, how do organizations like RSS work in an urban state like Delhi? Do they organize any small rallies or do they organize any small bethaks? Purva, I was already talking about it that Delhi is not the only state. Wherever elections are held, RSS always gives a helping hand to the BJP. However, we saw what happened in 2024 Lok Sabha elections, and the result of that, when you say the numbers, the tally got reduced. But after that, many efforts were made by the BJP to reach out to the RSS, the important functionaries of the RSS, and we saw how involved RSS was in Haryana, Maharashtra, as well as Jharkhand elections, and similarly in Delhi too. The question is how do they actually organize meetings and all? Well, they mostly focus on door to door connect, personal connect. If meetings take place, they are very very small size meetings, so they will go to one or two families, hold a small meeting there. So in urban area, they do not go for bigger meetings like they can do in probably villages. So in Delhi, they also have affiliated organization like Seva Bharati,
They have other organizations who are in touch with the people. They try to understand what are their issues, and those are then conveyed to the BJP through the organizing or general organizing secretary, who is the link person between the RSS and the BJP. So it is all done in a very professional manner. Even this time around, RSS had deputed a senior functionary who was in constant touch with the Delhi BJP as well as the central leadership. And any issues that were arising, they were updating them, they were identifying the weak areas, and they were immediately taking remedial measures. So RSS as a whole obviously is a very big organization, right from the youth to senior citizen to laborers. They have affiliated organization working in all sectors, so it becomes easy for them to reach out to the voters. राइट शंकर जी, आपकी तरफ रुख करूंगी अब। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एक तरह से बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने रेवड़ी कल्चर पे कई सवाल उठाए थे, लेकिन जब दिल्ली की हमने जंग देखी तो उसमें हर पार्टी ने खुले तौर पर फ्रीबीज ऑफर किए हैं, प्रॉमिस किए हैं, कई तरह की वेलफेयर मेजर्स, स्कीम्स प्रॉमिस किए हैं। तो हमें बस इनके कैंपेन के बारे में, बीजेपी ने किस तरह से दिल्ली को जीतना चाहा है, क्या क्या प्रोमिसेस किए हैं इसके लिए, और किस तरह से कैंपेन किया ग्राउंड पे, उसके बारे में विस्तार से बात करिए। देखिए, अगर आप बीजेपी के 2025 के कैंपेन की तुलना 2020 के कैंपेन से करें तो आपको स्ट्राइकिंग जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा कि क्यों बीजेपी इस बार के इलेक्शन में अगर शुरुआती रुझान में अच्छा करते हुए नजर आ रही है। 2020 का जो चुनाव था, जिसमें कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल का जो फ्रीबी मॉडल है, जो रेवड़ी कल्चर का जो मॉडल है, वेलफेयर का जो उन्होंने डिलीवरी एस्टैब्लिश किया है झुग्गी झोपड़ियों में, उसका एक तरह से मजाक उड़ाया था, उसको उन्होंने मॉक किया था। और बाद तक काफी दिनों तक प्रधानमंत्री या फिर वित्त मंत्री लगातार ये कहते रहे। वित्त मंत्री ने तो संसद के पटल पे ये कहा कि किस तरह से जो फ्रीबी और रेवड़ी का जो मॉडल है ये देश के लिए कितना खतरनाक है। तो अरविंद केजरीवाल का एक तरह से जो उनका रेवड़ी कल्चर था उसका मजाक उड़ाती रही बीजेपी को बाद में ये लेट रियलाइज हुआ, जिस तरह से बीजेपी ने देखा कि कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी को हार मिली, किस तरह से हिमाचल के चुनाव में बीजेपी को हारना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव फ्रीबीज ऑफर कर रही थी, वैसे ही दिल्ली में केजरीवाल ऑफर कर रहे थे। तो बीजेपी को ये समझ में आया कि आप सिर्फ केजरीवाल का मजाक उड़ाकर चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि आज की तारीख में जो वोटर है वो बहुत ही ट्रांजैक्शनल है। वोटर को समझ में आ गया है कि एंड ऑफ द डे उसकी जिंदगी कैसे आसान हो सकती है और कौन सी पार्टी उसकी जिंदगी को आसान कर सकती है, उसको वो वोट देता है। वो हो सकता है कि पैसे दोनों पार्टियों से ले रहा हो, लेकिन वो वोट एक पार्टी को जिसका कि ट्रस्ट फैक्टर या फिर जिसका कि रिकॉर्ड ज्यादा बेहतर है डिलीवरी देने में, उसको वोट करता है। तो बीजेपी ने इस चुनाव में केजरीवाल से ज्यादा फ्रीबीज, ज्यादा रेवड़ियां ऑफर की। केजरीवाल अगर 2100 रुपए महिलाओं के लिए ऑफर कर रहे थे तो बीजेपी ने 2500 रुपए ऑफर कर दिया। प्रेग्नेंट महिलाओं से लेकर तमाम उन्होंने फ्रीबीज ऑफर किए, क्योंकि उन्हें समझ में आया कि इस ट्रांजैक्शनल वोटर को सिर्फ आप इधर उधर की बातें समझा करके वोट नहीं ले सकते, आप सिर्फ हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पे वोट नहीं ले सकते। एक ऐसे समय में जब दूसरा जो कॉम्पिटिटर है वो बहुत बेहतर तरीके से फ्रीबीज ऑफर कर रहा है, तो इसलिए बीजेपी ने वो सारी फ्रीबीज, सारी रेवड़ियां उन्होंने ऑफर की। और जब बीजेपी को ये लगा कि केजरीवाल चूंकि बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिशियन है, उन्होंने ये कहा कि जब केजरीवाल को लगा कि यार तो बीजेपी ने भी ऑफर कर दिया, तो केजरीवाल ने फियर फैक्टर दिखाया कि ठीक है ये तो ऑफर कर रही है, लेकिन जैसे ही बीजेपी आ जाएगी मेरी सारी जो स्कीम है जिसका फायदा आपको मिल रहा था वो सब बंद कर देगी बीजेपी, जिसमें कि आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, बस राइड जो है। तो प्रधानमंत्री को अपनी रैलियों में ये कहना पड़ा, बीजेपी ने रिट्रेट किया कि नहीं जी हम कुछ बंद नहीं करने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस सीमा तक बीजेपी इस चुनाव को जीतने के लिए आगे जा चुकी थी। और बीजेपी को लगता था कि भाई केजरीवाल अगर ये फियर फैक्टर दिखाएंगे तो वोटों का नुकसान होगा, तो प्रधानमंत्री आ गए मैदान में, उन्होंने कहा कि नहीं हम कुछ नहीं बंद करने वाले हैं। तो आज की तारीख में जिस तरह की पॉलिटिक्स है, कोई भी पार्टी फ्रीबीज कल्चर को नहीं बंद करने वाली।
क्योंकि उन्हें लगता है कि वोटों का नुकसान होगा। और खास करके जब बीजेपी ने सक्सेस मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसी लाडली स्कीम के जरिए हासिल की है, तो ये फ्री कल्चर चलता रहेगा। तो बीजेपी ने कई सारी ऐसी स्ट्रैटेजी दिल्ली के चुनाव में अपनाई जो 2020 के चुनाव से इंटायरली डिफरेंट था, और शायद इसलिए वो कहीं ना कहीं शुरुआती रुझानों में रिफ्लेक्ट हो रहा है। जी बिल्कुल। शंकर, आपके लिए ही एक और सवाल चैट से लूंगी। बोल रहे हैं कि इफ बीजेपी मैनेजेस टू विन मिल्कीपुर सीट, डू यू थिंक द सो कॉल्ड फिनोमिनन ऑफ अवधेश प्रसाद सिंह, विल दैट defeat prove that Faizabad seat win was just a fluke? अब देखिए, फैजाबाद सीट एक इंटायरली डिफरेंट चैप्टर था, क्योंकि अगर फैजाबाद सीट के चुनाव जीतने के पीछे के कारणों को जाएं तो वहां पे बहुत सारे ऐसे मल्टीपल फॉल्ट लाइन थे उस समय, जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी उस फॉल्ट लाइन को राइट टाइम पे एड्रेस नहीं कर पाई थी। आप देखें कि जब अयोध्या में लैंड एक्विजिशन का जो मुद्दा था, राम मंदिर के लिए जो दुकानदार थे, उनसे जो जमीनें ली गई थी वो काफी नाराज थे। वो सारी फॉल्ट लाइन थी। सिर्फ अयोध्या को छोड़कर बाकी जो कंस्टिट्यूंसी है वहां पे असेंबली की, अयोध्या फैजाबाद सीट की, वहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी उस फॉल्ट लाइन को एड्रेस नहीं कर पाई थी। सिर्फ लल्लू सिंह के खिलाफ भी बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी। तो वहां पे कई सारे फैक्टर थे, लेकिन उसके बाद जब बीजेपी को वो सेटबैक मिला तो उसके बाद बीजेपी ने कोर्स करेक्शन किया। और वैसे भी आप देखें कि बाईपोल में ये कहा जाता है कि बाईपोल में ज्यादातर जो रूलिंग पार्टियां होती है वो जीतती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो सरकारी मशीनरी होती है वो भी इन्वॉल्व होती है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं। और इतने दिनों में बीजेपी ने जो गलतियां की थी उसको कोर्स करेक्शन का टाइम मिला, और इसलिए देखिए कि पूरी योगी कैबिनेट एक तरह से उस विधानसभा चुनाव में काम कर रही थी। 25 से 30 मिनिस्टर वहां पे कैंपेन कर रहे थे, खुद मुख्यमंत्री कई बार वहां पे मिल्कीपुर में जाके कैंप कर चुके। तो बीजेपी ने कोर्स करेक्शन करते हुए उस चुनाव को बहुत ही हाई स्टेक बैटल बनाया, और इसलिए वहां पर अगर लीड मिलती है बीजेपी को तो कम से कम योगी आदित्यनाथ के लिए 2027 से पहले अगर कुंभ की ट्रेजेडी को छोड़ भी दे तो कम से कम एक फेस सेवर होगा कि उन्होंने जो अयोध्या में खोया था वो कम से कम बचा लिया है। Bilkul, Saurav, we are getting a question for you from the chat. Incognito aspirant is asking how the results of Delhi election will affect the Indie alliance. Has the alliance lost its significance, and what will happen in upcoming assembly elections? I mean, the Delhi elections, the campaigning phase of the Delhi elections were a clear indication of the fact that the India alliance was actually in doldrums. We saw the two key players of the alliance, the Congress party and the AAP, fighting against each other. And the AAP and the Congress party, for a change, really went after Kejriwal in this election. We saw Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra actually attacking Kejriwal and other key faces of the Aam Aadmi party. So that I mean, we saw that happening during the campaigning itself. Right. We have a question from a member also. Kartik Parashar is asking how Congress will be looking at this result. Depends on how the vote share that the party manages to get. But I think Congress was very clear from the beginning that I think it will be pleased with the results if the Aam Aadmi party actually gets edged out by the BJP, because that will open up the space for the Congress party's revival. Because we have to understand the fact that the Aam Aadmi party essentially cornered the entire vote share of the Congress party. Right. At the trajectory of the Aam Aadmi party since 2013, if you look at the rise in their vote share, it came at the expense of the Congress. So the Congress is, as and when the Congress vote share dropped, so it dropped to some 28%, then 9%, then 4%. And at the same time, we saw the Aam Aadmi party's vote share rising to about 52%. But at the same time, the BJP's vote share largely remained intact. So the BJP's core vote base was not really affected with the Aam Aadmi party's rise. It was the Congress's base. So it entirely happened at the Congress's expense. And I think the Congress will see this as an opportunity to basically regroup and to revitalize and revive the party in the capital. And that is why I think they really took on the AAP this time, despite the fact that they were partners in the India alliance.
I'm just going to take last few questions for this live. So, urging all of our viewers, we are keeping track of the YouTube chat as well. So, do keep sending us questions, and our experts here will take them up. Anila, I'm directing the next question towards you. Aditya is asking. We saw Anurag Thakur being very active during Delhi elections campaign. Is it a clear indication that he's becoming next BJP chief after JP Nadda? Well, that is something that within even BJP many wouldn't know. So I would not like to, guess as far as do any guesswork on that. But yes, Anurag Thakur was also quite active during the 2020 elections. Obviously, in a way, it was for all the wrong reasons, the coinage of Goli Maru and all. However, this time round, a number of leaders, including Anurag Thakur, they were given two constituencies each out of 70, and he was given charge of Mustafabad as well as Karawal Nagar. From Karawal Nagar, Kapil Mishra is contesting. Mustafabad, Mohan Singh Bish, two very important seats for the BJP. So he was in charge of these two seats, and apart from that, he also carried out a number of rallies. He also held a number of meetings. He's also one of the few leaders who unveiled the manifesto for the BJP. So he was quite involved, but to say that his involvement will indicate that he will be the next chief is something that I would not like to get into. Yes. Right. Saurav, next question for you. Pratik Sharma is asking, how will the defeat of Delhi affect Punjab politics and the future of AAP? Future of AAP, of course, we've discussed before, but if you could talk a bit about Punjab politics Will here. will not have any immediate impact in Punjab. Will remain a stable government there, but of course, Bhagwan Mann will emerge as a tall leader in Punjab because I mean, we saw over the last few months, over the last few years, ever since the AAP came to power in Punjab, we saw many Punjab leaders complaining about the intervention, the interference of the Delhi-based leadership of the AAP in Punjab, which Bhagwan Mann tried to undercut. And I think he will be in a better position to handle the AAP leadership in Delhi if the AAP leadership in Delhi actually bites the dust. Right. For our viewers, you can see the early trends on your screens right now. But for now, for this live, we've reached the end of this live. Do keep sending us questions. And like I said, do keep an eye out on our website where we have live updates on the counting. And we'll be bringing you several videos with experts throughout the day, giving you instant analysis and giving you regular updates on what and who Delhi is voting for. Thank you so much for watching. Thank you, Apurva.